हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर होप लास्ट वीक आप लोगों का अच्छे प्रॉफिट्स बने होंगे few of the people in our group has made profits all the 5 days green. Only if we look at the weekly view in bank nifty and nifty both, especially if we start with the astro view, then with the astro view, this is the view which went wrong on a Monday, because Monday on the second session also we are expecting like a fall. But if you minus this portion on the Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, we had like wonderful tradings, right? And ये आपको sale zone दिया था, and every sale zone has given sale. Even on Friday, I told that market will go up, and ये sale zone से आपको sell करना है. So these sale zones will not keep anymore. These are for last week, and we will remove all this. Sorry, ये मेरे को पहले remove करना था. But anyway, we'll remove these things right now. So for next week, this is how the pattern looks like. And if you remember last week, what I told when market was here on the Sunday video, I told that Nifty's range would be 17,700 to 16,950. ये एक लेवल था यहाँ पे 950 है. मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, but if you look at market actually stayed in that range. This was our downside limit and 17,700 was our upside limit, right? तो डाउनसाइड लिमिट में एक बाइंग करनी थी. ये बाइंग तो हमने ली थी, डेफिनेटली ये बाइंग ली थी, बट ये वाला बाइंग हमने मिस कर दिया था इन लास्ट वीक, राइट? दिस इज व्हाट वी मिस्ड and this was the biggest one. Then after that anyway we're one sell on rise. So next week के लिए देखो my verdicts for the next week, मोटा मोटा जो मेरा व्यू है, market is sell on rise, there is no doubt. Okay, market is sell on rise. There is this time actually bank nifty looks little bit confusing to me. This entire year starting January 2022, 1st January 2022, we have been predicting bank nifty really well. Okay, हमने जो बोला है बैंक निफ्टी ने वही किया है. I mean I gave you like 1500 2000 point का sell almost in 2 weeks, and that happened on every Monday and Tuesday combined, right? So bank nifty has given us a good amount of money compared to nifty, but this week, coming week, nifty looks to me as a predictable trading setup rather than bank nifty. I'll tell you why. But let's first go with the mota view of next week. So the mota view of next week is sell on rise market. Okay, now if I go to the astro timing, which few people believe, few people don't believe, but if you look at last week's astro timing, except Monday, yes, second half, rest of the timings has worked wonderfully. So you can take a screenshot of this astro timings for next week. I have put it in my channel too. This is for index only, right? Don't try to put it into any equity segment. So 21st February, which is Monday, it looks like the first half an hour to be positive with the upside capping, 10 to 1:45 p.m. down, and then 2 p.m. to 3:30 positive. Okay, and if we keep on drawing this, so this is how market ideally looks like. So Monday morning half an hour positive, then it's a good downside, and then is a little bit recovery on the day end, last 1 hour. It might be a very slow recovery. Okay, Tuesday it looks like a range bound with the upside capping. So I think days closing up on Monday should not be closed. So around, let's say 11:30 market is here, and from 11:30 to 2:45 market is positive, and this will happen very beautiful in bank nifty. I'll tell you how. Okay, let me draw the pattern. And after this 1 to basically 3:30 market is a little bit, sorry, 1 to 1:30 market is a little bit down, and then market is a little bit positive. That's how it looks like on a Tuesday. So Tuesday we are expecting like a doji candle, okay, which might be ideally a pause candle for market. Okay, and if we look at Wednesday, as I am saying, Wednesday we might see a black Wednesday. 11:45 the market is down, 11:45 to 12:30 a little bit up, 12:40 to 1:45 again down, 1:40 to a very small positive, and 2:35 to 3:30 p.m. again down. This is Wednesday. Wednesday looks like a very wonderful red candle.
Okay, and Thursday ideally we have a range bound up to 9 to 10:30 upside capping, 10 to 12:45 ideally positive, right? And after 1 p.m. again market is coming down. This is would be a bear trap, because Friday either gap up or gap down, doesn't matter. Assuming a flat opening, we are seeing a bull run in Nifty and Bank Nifty both on the index. Okay, so this is as per the timing the market looks like. Okay, hope you have taken the screenshot. I'm deleting out. We'll just keep the Monday wala stuff for our reference. Okay, and rest everything will delete so that we can do our analysis. Okay, right. So we'll keep it here. Monday timing. Now, if we come here, this is what market looks like. Okay. In this scenario, if you look at, I'm telling you Nifty because I'm more comfortable in Nifty rather than Bank Nifty, ideally, right? So if you look at market is actually sell and rise as per the Astro timings. Okay, other than the Friday one. The Tuesday retesting that I'm talking about, the retesting is this. Okay, I've drawn a line here if you see. And if you do like this, you will see a descending triangle pattern. And it's a beautiful descending triangle pattern. Okay, it's a beautiful descending triangle pattern which we cannot ignore. As simple as that. Okay, this is a descending triangle pattern. Okay, and it's not symmetrical. So do not expect market to cut this and go on a ultra bull run on Monday onwards. That's not possible. And it is on the downside, on the verge of downside. If the gap down is going to happen, the target that we are looking at 200 points almost. Yeah. So if you look at almost mota this swing high, 200 points ka target. So we're talking about a 17,050. And 17,100 is a beautiful level, but 17,050. Okay, itna target market mein aana chahiye. It might come a little bit more also, but 17,050 agar ye breakdown ho jata hai to aa jayega. Now that is one target, right? I gave you. Sorry for the background noise if it's anything happening. Then we have another pattern here, which is actually a head and shoulder pattern on Nifty on a 5-minute time frame. If you see, right? Right. The moment this neckline is broken, the target, we should minimum take it 137 points. Okay. ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया, ये लेवल इसी का टारगेट है एक्चुअली, हेड एंड शोल्डर का टारगेट है, विच इज आर 17,114. तो 17,100 आप मोटा मोटा ले लो, ठीक है. तो 17,100 to 17,050, okay, best case and worst case should be the target on Monday before a positive move happens. Everybody is clear? Monday की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. Now once Monday, let me delete this. Okay, once Monday this move has been achieved, how market will behave? Because Monday mein we are saying after the fall on the last 1 hour, market is going to do a recovery, small recovery. It might be possible, guys. It might be possible. Okay, I'm not guaranteeing it. It might be possible that Nifty goes and retests this trend line, sorry, a triangle ka neckline, head and shoulder ka necklines around this level where I have created my sell zone, weekly sell zone. Okay, and then continue the downtrend on Tuesday as well as Wednesday, the way we have explained. If this happens as per price action, as per Astro timing, if you combine everything, after getting the head and shoulders ka target, after getting the descending triangle ka target, market recovering and touching the trend line, this would be a beautiful trade either Tuesday or Wednesday. Beautiful trade to get. It may come, may not come. Okay, because this is the level it might test or this is the level it might test, 17,200. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन है, बट हम देखेंगे. तो उसमें ट्रेड बहुत सिंपल होता है. लेट मार्केट टेस्ट
जो रिस्की ट्रेडर है दे कैन स्टार्ट सेलिंग, बट जो रिस्की ट्रेडर नहीं है, लेट मार्केट कम डाउन 50-60 पॉइंट्स. द मोमेंट मार्केट ब्रेक्स दिस लेवल, then Tuesday, Wednesday you can continue the sell. That is what my view is. Okay. Wednesday fall कितना होगा? I don't know. It looks like a brutal sell. तो अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है तो हमारा जो पहला टारगेट है वो टारगेट है ये 16,900. ये जो लास्ट वीक का भी था अराउंड 16,900 इज टारगेट वन. 16,900 अगर वेडनेसडे फर्स्ट हाफ में ब्रेक हो जाता है, ओके, remember this what I'm saying. If 16,900 is broken in Wednesday first half, then Friday tak 16,500 would be the target. You can see I do not have any buy zones here on a weekly level other than this. Last week I have gave you a buy here 16,950, correct? Everybody remembers. This week I'm giving you a buy only at 16,500. 16,900 में buying नहीं है, okay? We will see. एंड फ्राइडे को अगर ये लेवल मिल जाता है या थर्सडे एंड ऑफ द डे ये लेवल मिल जाता है तो वी माइट सी ए 200 to 300 पॉइंट की रिकवरी मिनिमम यहाँ तक 16,800 तक की रिकवरी ऑन फ्राइडे, बिकॉज फ्राइडे इट लुक्स अ वेरी bull side, and that bull side only happen if continuously we are on sell on rise on 4 days. Okay, that scenario we have seen before. Otherwise Fridays are generally second half you see good amount of sell, but this Friday you may not get a good amount of sell on Friday if market is going from this buy zone. Okay, मंडे आपका क्लियर, मंडे का ट्रेडिंग में मैं आता हूँ, बट ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपका व्यू क्लियर हो गया. ठीक है, फ्राइडे को व्यू तो अपना क्लियर है, बाइंग है 16,900 पे, कोई बाइंग नहीं है, देयर इज नो बाइंग, ओनली बाइंग इज एट 16,500. ओके, 16,500 के आसपास मेरी एक बाइंग है, बट हम वो देखेंगे. ओके, ये जो हम वीकली व्यू बना रहे हैं ऑप्शन सेलर के लिए बना रहे हैं. ओके, तो ऑप्शन सेलर के लिए गाइस द मैक्सिमम कैपिंग ये तो यहाँ बहुत ऊपर है, बट आई वुड पर्सनली वुड लाइक टू कीप ए मैक्सिमम कैपिंग ऑफ 17,400. ओके, डाउन साइड इज अनलिमिटेड फॉर मी, अपर साइड इज कैप्ड एट 17,400. दैट मींस मार्केट अगर 17,400 के ऊपर कभी भी गया I will cut my stop loss. Okay, जाना नहीं चाहिए ideally. So let us see. Now we have done this. I hope you got a mota view. Let's start with a weekly analysis of Nifty. Then come to daily and do it. Okay. If we take a weekly analysis, guys, the way the pattern is being formed. Okay. To me, the weekly candle looks red actually. Okay, the weekly candle looks red. Target वन तो यही है जो बॉटम है, अगर आप देखोगे 16,800 के आसपास है, यहाँ तो आएगा आइडियली. 900 पे तो मैंने कोई बाइंग दिया ही नहीं आपको, तो 16,800 900 तो आ जाना चाहिए. बट अगर वेडनेसडे को मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये डबल बॉटम से गया था, अगर ट्रेड कर रहा है तो 16,500 भी आएगा. ओके, तो वेडनेसडे इज गोइंग टू बी डू और डाई स्टफ फॉर अस. ऑप्शन बायर तो इंट्राडे में ही आप करो, ऑप्शन सेलर है तो पी सेल मत करना, सी सेल इज स्टिल सेफर. ओके, पी सेल यू कैन डू फॉर नेक्स्ट वीक आफ्टर वेडनेसडे. ओके, दिस वीक आई वुड नॉट कंफर्टेबल इन सेलिंग पी बिकॉज पी में आई डोंट हैव एनी लिमिट ऑन द डाउन साइड. ओके, क्लियर. नाउ इफ आई गो टू ए डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में अभी अगर देखोगे दिस इज अ bearish candle, though it is a green one, it's a bearish candle. That means if the day low is broken, जो मैंने डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया है आपको, राइट, इफ द डे लो इज ब्रोकन फ्राइडे का, देन तो मार्केट गया, मोस्टली सेल ऑन राइज ही रहेगा. निफ्टी का जो डू डाई लेवल है, वीकली लेवल में देता हूँ, निफ्टी का जो डू डाई लेवल है 17,180 है, 190 है. ओके, मार्केट इसके नीचे जब तक है, फॉर एग्जांपल मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है और आप सेल ऑन राइज में हो, तो इफ यू आर इन सेल ऑन राइज 17,190 शुड आइडियली बी योर स्टॉप लॉस. यू कैन ऑलवेज री एंटर. एक्चुअली तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, दिस इज माय सेल जोन 250, बट ये 60 पॉइंट्स का जोन हो जाता है, आप इसका स्टॉप लॉस रखते हो, री एंट्री यू कैन डू हियर. ओके, राइट, दैट इज यू कैन डू. बट मोस्ट वाले जो पैटर्न्स मेरे को बता रहे हैं, एटलीस्ट 17,100 टू 17,050 का टारगेट मार्केट को एक बार दिखाना चाहिए. ट्यूसडे मार्केट शुड कंफ्यूज यू इन ए पॉज कैंडल, and Wednesday it should continue the red side movement till this.
ओके ये बॉटम तक तो आना चाहिए आइडियल, ये जो हमने बनाया 16,900 ये दोबारा आना चाहिए, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे। ये अगर वेडनेसडे को आ रहा है तो हम डाउन साइड कंटिन्यू रखेंगे, ये अगर थर्सडे तक आ रहा है तो हम कोई डाउन साइड कंटिन्यू नहीं रखेंगे। वी विल अगेन बाय फॉर में ट्रिपल बॉटम ऑन फ्राइडे। फ्राइडे से पहले देयर इज नो बाइंग फॉर मी। ओके क्लियर एवरीबॉडी? निफ्टी का, निफ्टी बहुत क्लियर ट्रेड है, मतलब अनलेस मार्केट थोड़ा सा चमत्कार कर दे और हमारे व्यू को रॉन्ग कर दे, निफ्टी इज वेरी वेरी क्लियर ट्रेड नेक्स्ट वीक कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ओके टाइमिंग आपने देख लिया, ये मैं पहले इसमें आता हूँ, बैंक निफ्टी में आता हूँ। देखो बैंक निफ्टी की भी जो वीकली जो आपको कैंडल्स दिख रहे होंगे, these are weekly candles. This is doji, this is doji. The only problem is this doji is made on the downside. Okay, that means बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से स्ट्रॉन्गर दिख रहा है, इट इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर। ओके एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बैंक निफ्टी में दिस वीक आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज, बट हम लोग ट्रेड लेंगे। even if it is stronger, the dojis are being formed on a lower highs and lower lows, which is a downside का basically target. Okay ठीक है, simple. now weekly की बात कर रहे हैं, if you look at this week and this week, okay, so this is current week, so 2 weeks before, this is the fourth week, third week, 3 weeks before, the market has a similar range, exactly similar range. Can you see this candle and this candle? weekly की बात कर रहा हूं, okay, this candle and this candle has exactly the same range, same opening, same high, same low, same closing. The only problem is this is positive and this is negative. That is the only problem in weekly. If you go by that view, okay, if you go by that view, if this doji candle's high was broken, I mean closing was broken, market gave a good bull run. Okay, if this doji's low will be broken, I mean closing will be broken, it will give you a downside movement, red candle. So on that basis, though I'm not so confident in Bank Nifty, but on that basis, on a weekly basis, I still can say that Bank Nifty would be a red candle. Okay, that is point number 1. Let us go to the daily wala analysis. If you see daily analysis, I have drawn some Elliott wave का pattern. Okay, अभी हमें इतना ये सब नहीं चाहिए actually. Sorry, I should have cleared it out before, guys. Sorry, just give me like 5 seconds. Okay. यहाँ पे हमने बहुत पैसे बनाए, but ठीक है, anyway, if you look at this pattern, right, and okay, where this is basically the reasonable top, this is forming lower highs. If you look at the fifth wave is still pending, okay, and in the fifth wave we can at least expect 35,800 का target. Okay, that means we're talking about a 1700 fall in Bank Nifty. If that fall has to happen, we can expect a 800 to 900 point ka fall, or around 1,000 point ka fall on Wednesday. That is what my view is. Okay, so that means what I'm saying, how Bank Nifty ideally should behave. For example, market Monday नीचे आता है, ये double bottom से market let's say ऊपर जाता है. Okay, so around this level, okay, around this level, ठीक है, ट्यूसडे को रीटेस्ट करता है एंड वेडनेसडे को ये लेवल कट करके कंटिन्यू करता है, एंड थर्सडे आल्सो इट कम्स हियर. ओके, मैग्नेट्स को बंद करना पड़ेगा. ओके ठीक है, तो एक बैंक निफ्टी की जो टारगेट मेरी होती है, पर्सनल टारगेट जो होगी, टारगेट 1 तो यही है. ओके, आई हैव ए टारगेट 1 ऑफ 36,700. वीकली लेवल आप लिख लो, डू डाई लेवल यही है 37,582 जो क्लोजिंग है फ्राइडे की. ओके, डू डाई लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब सेल ऑन राइज ही है. ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 37,700 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए. इससे ऊपर मार्केट गया तो आप पी पोजीशन शुड नॉट बी देयर इफ यू आर एन ऑप्शन बायर. ओके, you can always re-enter because the weekly sale zone is here 38,110.
ओके, ये मेरी कैपिंग भी है अपर साइड आइडियली ये वीक का 38,110, डाउन साइड इज अनलिमिटेड, मैंने पहले भी बोल दिया। 38,110 मेरी जो है वो कैपिंग है अपर साइड मैक्स टू मैक्स। ओके, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बट माय व्यू इसके मार्केट सेल ऑन राइज होना चाहिए। मार्केट ये टारगेट आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं है, बिकॉज देयर इज वन लेवल आपको जो ड्रॉ करके रखना है, विच इज माय अनटच्ड लेवल, विच इज अराउंड 36,000, एग्जैक्टली 36,000। ओके, एकदम राउंड लेवल पे। ठीक है, ये एक लेवल आप ड्रॉ करके रखना, इसको थोड़ा मोटा करके रखना, क्योंकि मार्केट इफ फ्राइडे को, अगर फ्राइडे तक मार्केट यहाँ पे पहुंच जाता है, 1700 पॉइंट की फॉल होती है, तो 36,000 से भी मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है ऑन फ्राइडे ऑन ए बुल रन। दैट बुल रन कैन बी अप टू 600 टू 700 पॉइंट्स इजिली। ये वाला जो स्विंग लो है उसको टच करने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है, बट वो फ्राइडे करेंगे। तो फ्राइडे को हम आइदर 36,000 और 35,750, ये दो रेंज में से ये एक बड़ा बाई जोन है, बट देखेंगे। बट मोस्ट वाले आई थिंक 36,000 से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, यहाँ तक नहीं आएगा। ओके, तो टारगेट जो हमारी हो रही है वो 1600 पॉइंट्स की टारगेट है डाउन साइड में। अपर साइड में अगर मार्केट जाएगा तो मैं यहाँ पे भी सेल ऑन राइज का सोचूंगा मंडे को। मंडे की ट्रेडिंग के बाद इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट को हम ट्रेड कैसे करेंगे, स्पेशली ऑप्शन बायर्स। ओके, मंडे अगर मार्केट नीचे से ट्रेड करता है दिस साइड, ट्यूसडे यू कैन गेट ए लिटिल बिट ऑफ बुल ट्रैपिंग, लिटिल बिट ऑफ, बट वो बुल ट्रैप में ट्रैप नहीं होना है, मार्केट को वेडनेसडे भी हमें सेल करना है। ठीक है, लेवल सबको याद आ गए। तो ये देखो अपर साइड 38,140 का लेवल है। ठीक है, डू डाई लेवल 37,582, टारगेट 1 36,680, टारगेट 2 इज 36,000 हाई लेवल। ओके, मार्केट इसके नीचे जाएगा नहीं, अगर मार्केट बाई चांस चला भी गया तो फ्राइडे तक यहाँ तक वापस आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। देखते हैं इलियट वेव काम करता है कि नहीं करता है, विल जस्ट सी इट। बट टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक तो लेके चलो एटलीस्ट। ठीक है, सो दिस इज आवर डेली बेसिस पे। मैंने आपको वीकली डेली दोनों में बताया, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो कैंडल स्टिक के पैटर्न से भी अगर आप देखो मार्केट मेरे को सेल साइड ही लग रहा है। ओके, तो अल्ट्रा बुल तो नहीं होंगे मार्केट में, ट्रैप ए लिटिल बिट ऑन द बुल साइड, बट हम अल्ट्रा बुल मार्केट में नहीं होंगे, सेल ऑन राइज का ही हम सोचेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर वीकली व्यू। नाउ इफ यू कमिंग टू द मंडे वाला व्यू, and if you see why I'm saying that bank nifty is a little bit confusing for me, it will be clear after Monday anyway, but Monday trading is important क्योंकि जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसी, एक्सिस, एसबीआई, अगर ये देखोगे इन्होंने एवरीबॉडी फ्राइडे को इन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग करी है। बियरिशनेस इसमें इन्होंने बनाया नहीं है, जैसे निफ्टी में द बियरिशनेस इज वेरी क्लियर विद डिसेंडिंग ट्रायंगल, देयर इज ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट, उसमें क्लियर है। बैंक निफ्टी में इट इज नॉट क्लियर। तो मंडे को अगर क्लियरेंस मिलती है तो मंडे रात की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, बट व्यू हमारा फिर भी सेल ऑन राइज का ही होना चाहिए। एक चीज खाली आपको जो ध्यान देना है, ट्रेंड ट्रेंड लाइन बहुत दिनों के बाद मैं दे रहा हूँ। आई थिंक आफ्टर 3 months आई एम गिविंग यू ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग। आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में तो 5 मिनट्स में तो है ही है ये ट्रेंड लाइन। आई थिंक आई हैव ड्रॉन इट, विच इज द डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, इसको ड्रॉ करके रखना है। अगर आप पी बायर हो, बाई चांस मार्केट ऊपर चला जाता है, बाई चांस मार्केट इज सुप्रीम, इट कैन डू एनीथिंग, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट अगर 10-15 मिनट सस्टेन करता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू कट योर लॉसेस, यू कैन ऑलवेज री एंटर, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन अगर सस्टेन कर जाता है, मार्केट ब्रेकआउट मार देता है, वेरी वेरी हाई चांसेस कि हमारा सारा एनालिसिस गलत हो जाए, एस्ट्रो व्यू गलत हो जाए, प्राइस एक्शन गलत हो जाए, और मार्केट 17,700 तक आ जाए, 500 पॉइंट की मूवमेंट दे दे। ये पॉसिबिलिटीज है व्यू हमारा सेल ऑन राइज का है, बट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये ट्रेंड लाइन के साथ। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ही ट्रेड करना है आपको। ठीक है, मंडे अगर ये ट्रेंड लाइन मार्केट तोड़ नहीं पाता है अपर साइड और स्टिल ट्रेडिंग बिलो दिस जोन, देन वी आर ऑलमोस्ट श्योर के मार्केट अभी नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो मंडे का वेट करो। दिस ईयर आई हैव बीन टेलिंग यू wait till Monday before you start your positional trading in basically Nifty and Bank Nifty, right? So
बैंक निफ्टी में भी जो है ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके रखना है। ओके, बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है, मैंने तो यहाँ पे ब्लैक लेवल का जोन दिया, ये देखो ये स्विंग हाइज है ना, ये 37,800, 37,800 के ऊपर अगर मार्केट गया, यू शुड नॉट होल्ड योर पीस एट ऑल। ओके, मैं ये लिख देता हूं, देखो ये दिमाग में रखना, यू शुड नॉट होल्ड योर पी above 37,800. Saving money is very, very important. Okay, people who are regular trader, they know. Okay, यहाँ पे लॉस ले लोगे, दोबारा एंट्री करोगे तो पैसे कमा लोगे, बट इफ यू होल्ड इट, मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा कि ये सेल जोन वगैरह कुछ मानेगा नहीं हो, इस तरह से ऊपर जाएगा कि यू विल ओनली गेट इनटू लॉसेस। ओके, रिकवर नहीं कर पाओगे, एवरेज करोगे, ये करोगे, वो करोगे, विल नॉट बी एबल टू रिकवर। तो 37,800 का लेवल जो है, यहाँ इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करा है, नो पी एट ऑल, देन हम लाइव में देखेंगे करना क्या है। ठीक है, तो दोनों में ट्रेंड लाइन रखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। ठीक है, ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रहा है, देन यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस। ओके, ठीक है, मंडे ट्रेडिंग में आते हैं। मंडे ट्रेडिंग में देखो जो दिख रहा है ना, मार्केट फर्स्ट हाफ नाउ मेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट। ओके, हाउ बिग इट वुड बी डोंट नो। ओके, ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पे 37,800 के आसपास। ये बैंक निफ्टी स्पेशली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में इट माइट बी पॉसिबल कि मंडे मार्केट, पॉसिबल मंडे मार्केट गैप अप के ऊपर जाए और यहाँ से सेल चालू करे। मंडे का टाइमिंग मैंने आपको ऑलरेडी दिया है सेल का, राइट, आफ्टर फर्स्ट 1 आवर सेल ही है, तो यहाँ से सेल चालू करे, पॉसिबल है। ओके, किया तो यहाँ पे फिर सेल करो। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोला पी बाय नहीं कर सकते ये लेवल पे, यहाँ से बाय कर सकते हो, आप एक अटेम्प्ट ले सकते हो। ओके, एंड ये कंटिन्यू अगर हो गया और ये वापस इस लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू किया अगेन, देन यू आर सेफ। ओके, ठीक है, सेकेंड सिनेरियो जो होगा, जो हमारी एक प्रिफरेबल सिनेरियो होगी, कि मार्केट यहाँ पे आए, ये 37,300 का लेवल है, मैंने आपको बहुत बार दिया है, इस लेवल में हमने 3-4 ट्रेडिंग तो करी है। ओके, 3-4 ट्रेडिंग्स दैट यू हैव डन एट दिस लेवल, स्पेशली लास्ट वीक में तो 2 ट्रेडिंग्स। मार्केट यहां से जब ऊपर जाएगा, ये ट्रेंड लाइन में ना, ये ट्रेंड लाइन के आसपास और ये लेवल दोनों में से 37,600 के आसपास का लेवल से मार्केट अगर सेल देता है, तो ये सेल आपको ले लेना है, ये सेल ले लेना है। व्यू ये है मंडे का। ओके, दिस वुड बी ए प्रिफरेबल ट्रेडिंग अगर मार्केट ऐसे करता है, फर्स्ट हाफ एन आवर अपर साइड, देन डाउन साइड, एंड लास्ट में रिकवरी इन द लास्ट 1 आवर। ओके, स्पेशली अगर ये 37,350 300 का लेवल तोड़ देता है मार्केट, वेरी वेरी हाई चांसेस के मंडे ही मार्केट 36,800 के आसपास आए। ओके, दैट मींस I am telling you, I am giving you a 700 point का fall on Monday itself. Okay, one side. ठीक है, राइट, टारगेट 1 हमारा ये होना चाहिए 37,050, which is like around a 250 point का fall, and then another 250 point का fall. Okay, वैसा लेना है, बट मुझे जो लगता है, मार्केट अगर ये लेवल तोड़ देता है, मंडे आए या ट्यूसडे आए, मार्केट 36,800 के आसपास एक बार आना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी, ये अपनी मंडे की एक बेहतरीन ट्रेड होगी अगर मिल जाता है। सेकेंड ट्रेड जो है, विच आई डू नॉट लाइक, मार्केट बेसिकली इसको ऊपर लेके जाए और फर्स्ट 1 आवर में बेसिकली एक अल्ट्रा बुल रन मारे, बिकॉज क्लाइंट्स ऑप्शन चेन के हिसाब से दे आर अल्ट्रा बियरिश, रेस्ट ऑफ द पीपल आर बुलिश, तो एक बड़ा कैंडल बना दे। Now remember, in a Monday morning, if the breakout candle is too high, you just need to wait. ये level, any level. So let's say you get a very big candle on Monday morning. First 30 minutes, first 15-minute candle is a very big candle. The second green candle is a small candle. Now, whenever that candle is broken, you can start selling. Believe me, it would be a beautiful sell. Okay, it would be a beautiful sell. Monday morning breakouts will always be failed. Okay, लेकिन आपको हाफ एन आवर का एटलीस्ट वेट करना है,
एंड सेकेंड 15 मिनट्स का कैंडल का लो के नीचे ही यू शुड इनिशिएट योर ट्रेड एंड देन यू नीड टू कीप द ट्रेड फॉर ए लॉन्गर टाइम. देन ये लेवल कुछ काम नहीं करेगा, ये सारे तोड़ देगा ये. ठीक है, बट दिस इज अ लिटिल बिट रिस्की ट्रेड, बट ये हो सकता है. ठीक है, ये हम लाइव में देखेंगे. सो दीज आर द ओनली टू ट्रेड्स. और बैंक निफ्टी अगर हैवी गैप डाउन हो जाता है, दैट मीन्स 37,300 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो आइडियली तब भी मैं सेल करूंगा, बट मैं रीटेस्ट पे सेल करूंगा. If 37,300 is retested and that sell has to be on second leg only. Second leg only. Why I'm saying second leg? Because this is the level where buyers will start to come back again. 50 points either udhar. Okay. Buyers will come, seller will start selling, buyers will come, seller will start selling. When the decision is made on the second leg, okay, sellers are heavy now, then only you will sell. Otherwise not. So here on the sell, on the gap down scenario, second leg में ही sell है, touch में sell नहीं है. Okay, clear? So I've given you only 3 trading. Bank Nifty थोड़ा सा confusing है मेरे लिए भी Monday, but Monday के बाद will be very very clear. तो Monday जो trading है सिर्फ 3 सिनारियो दिए हैं जो हमारे रेगुलर्स होते हैं, गैप अप और ब्रेकआउट. Okay, and breakout के conditions I have already told. 15 minutes candle, not 5 minutes, 15 minutes candle. Okay, flat opening, then we'll see where market is going, and the third one is cap down. Okay, 3 सिनारियो है बैंक निफ्टी में. निफ्टी में तो मेरा मन कर रहा है कि ये ब्रेक डाउन कर दे. ठीक है, अगर ब्रेक डाउन करता भी नहीं है ना, निफ्टी में ट्रेंड लाइन, या तो ट्रेंड लाइन का आप एसएल ले लो, या फिर जो मैंने फ्राइडे को सेल जोन बनाई थी थोड़ा ऊपर जाएगा एक्चुअली, या लाइक दिस. ये सेल जोन पे आपकी स्टॉप लॉस के साथ आप सेल चालू कर सकते हो दोबारा, बट मुझे नहीं लगता कि ये सिनेरियो बनने को, तो कुछ भी बन सकता है, बट मुझे नहीं लगता ये सिनेरियो बनेगा मंडे. ओके, आई डोंट थिंक सो. हो गया तो माइट बी पॉसिबल. मुझे जो सिनेरियो लग रहा है, मंडे फ्लैट ओपनिंग और लिटिल बिट नेगेटिव ओपनिंग. ओके, मार्केट गोइंग अप लाइक दिस और लाइक दिस, स्पेशली दिस जो हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन है ना, हेड है सॉरी, राइट हेड का, वहां से यू कैन गेट ए सेल 17,100 and a little bit of recovery, and it is still trading on Monday. It is still trading below 17,190. In that case, Tuesday में high possibilities है कि मार्केट ये नेकलाइन को रीटेस्ट करे और ये सेल जोन को रीटेस्ट करे एंड सेल कंटिन्यू करे, एंड वेडनेसडे को ऐसा है मार्केट. क्लियर? ठीक है, चलो व्यूज तो मैंने बता दिए. मंडे की ट्रेडिंग करो पहले. मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑप्शन बायर इन माय ऑडियंस, तो इंट्राडे में ही करो. आपको वीकली से कोई मतलब लेना देना नहीं है. ऑप्शन सेलर जो है वो सी सेल करते रहो. ठीक है, अगर एडजस्टमेंट करनी भी पड़ेगी तो एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, पी सेल मत करना. डाउन साइड इज वेरी वेरी ओपन टू मी. ओके, क्योंकि वेडनेसडे को मैं एक ब्रूटल सेल देख रहा हूँ, और ब्रूटल सेल कितना बड़ा हो सकता है वी डोंट नो. ठीक है, बाकी जो होगा हम डेली वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट, जय माता.